Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. I welcome each and everyone here. I welcome to daily newspaper analysis session. My name is Ashish Bhargav. So how are you? कैसे हैं आप सब? I hope that you guys are doing well. Before we start, let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Am I audible and visible? Okay, so as we know that in daily newspaper analysis, what exactly we discuss about all the important news events and why it is important, because being aspirants, you should know that what is happening around us, and majorly in this newspaper analysis session we discuss about the Hindu and Indian Express. So कैसे हैं आप सब? अगेन आई होप आप सब अच्छे होंगे. एंड ये जो है डेली न्यूज़ एनालिसिस सेशन, इसमें मेजरली हम क्या डिस्कस करते हैं? इसमें हम नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़, स्पोर्ट्स बेस्ड न्यूज़, साइंस एंड टेक, पर्सनल न्यूज़, summits, conference, miscellaneous, and apart from that we also discuss about we can say Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is also we discuss in newspaper analysis session. So we'll discuss also questions of the day. So stay tuned till the last. We'll discuss the 5 questions that would be very important. So dear friend, this is important to gathering information and to solving the question. There are different things. Keep in mind. और क्विक टिप्स में आज सीखेंगे कि G7 कंट्री को लर्न करने के लिए व्हाट इज द नेमोनिक्स. क्विक टिप्स नाम से ही पता है आपको कि बहुत जल्दी विद इन 10 सेकेंड, दैट्स माय प्रॉमिस, विल लर्न हाउ मेनी कंट्रीज इन G7. स्टे ट्यून. हियर इज द वेरी फर्स्ट इज आज है अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे. दैट ट्रिब्यूट टू द विजर्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी. ही वॉज बॉर्न ऑन द August 29. That was August 29, 1905. So that is celebrating the spirit of sportsmanship, teamwork and dedication. Let's continue to inspire that my students to stay active, embrace the value of sports in the every aspect of their lives. So Major Dhyanchand jo hai is a legendary field hockey player and one of the India's most celebrated athletes. Dhyanchand was born on August 29, 1995. and honoring his significant contribution and marking his birth anniversary. और 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द डे एनुअली. ध्यानचंद जो थे, दैट वाज बोर्न एज आई टोल्ड यू August 29, 1905. दैट वाज अ प्रोमिनेंट हॉकी प्लेयर इन इंडियाज pre-independence period, and he played a key role in India's first hat trick of Olympic gold medal, and that was in the year of 1928, 1932 and 1936. So जो मेजर ध्यानचंद से started hockey career with the British India Army Regiment team, where he practiced under the moonlight and rose through the ranks that was called up for the Indian hockey team for the 1928 Olympics. ठीक है जी. So these kind of information that you should know कि इनके बारे में, और मेजर ध्यानचंद जो है इनके ऊपर खेल अवार्ड भी देते हैं. इस साल हॉकी में हमें ब्रॉन्ज मिला, दिस ईयर इन पेरिस ओलंपिक्स. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. हियर इज हिमाचल प्रदेश दैट मेक्स 21 द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन. सो हिमाचल प्रदेश असेंबली ऑन ट्यूसडे पास्ड अ बिल इंक्रीजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21 or in order to support gender equality and higher education. So Prohibition of Child Marriage Bill 2024 that was introduced by Women Empowerment Minister Dhaniram Shandil in the Assembly during its ongoing monsoon session, and the bill was passed by a voice vote. So we are the first state in the country to enact the legislation. And why it is important to understand this? Because as of August 2024, the minimum age here for marriage in India is 18 years for women and 21 years for men, and it is mentioned in Child Marriage Act of 2006. This applies to all types of marriage, including court marriage,
on marriage that takes place before the legal age are considered illegal. So, however, if the both parties are past puberty, the marriage is considered valid, and the minor can request annulment once they reach the legal age. So that is here Himachal Pradesh became the first state of our country that to enact the legislation, the minimum age of marriage. And the legal age, apart from, I am not talking about for the Himachal Pradesh, overall as of August 2024, the minimum age for marriage in India is 18 years for women and 21 years for men, according to the Prohibition of Child Marriage Act of 2006. I hope this one is very clear. Now we move to the next article. Here is न्यू एज गेटवे डिवाइस द लेटेस्ट हेल्थ थ्रेड. बेसिकली ये जो आर्टिकल है आपका, इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की है. बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. वाई मेंटल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे बेसिकली जो अभी ई सिगरेट्स एंड ऑल जितने भी आपके उसमें वेपिंग डिवाइस होते हैं थ्रू अ टारगेटेड मार्केटिंग ऑफ फ्लेवर्स, स्ट्रॉबेरी, कॉटन कैंडी, पॉप रॉक्स, लेमनेड. सो ये सारे हाउ इट इज़ impacting the society. So what happens when a portrayed healthy alternative turns out to be more dangerous than the original? So this is precisely what is happening with the new age gateway device. जैसे e-cigarette हो गया, जैसे आपका वेपिंग हो गया, वेपिंग पेन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन सिस्टम होते हैं. अब ये जो निकोटिन डिलीवरी सिस्टम है, जितने भी ये डिवाइसेस हैं that were portrayed to offer a healthier alternatives to smoking that would make it easier to quit tobacco. But reality ये है is quite different. So instead of they have caused a public health crisis causing physical harm and affecting the mental well-being of children. So यहाँ पे instead of helping people to quit tobacco, अब यहाँ पे वेपिंग में ये मेंशन क्या होता है कि अब आप इजीली टोबैको क्विट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं. बट आपको मैंने बताया कि इससे बहुत सारे consequences हैं. So helping people to quit tobacco, the manufacturer of these new age gateway device have discovered a lucrative market. And उसके लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ये करते हैं. जैसे एग्जांपल इसमें मैं आपको देता हूँ, लाइक डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 2023 में. सो ई सिगरेट जो था, इसके इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, दैट इज डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग ये जो है आपका, इसमें जो यूज़ करते हैं 2023 के अकॉर्डिंग, ई सिगरेट्स दैट वर द मोस्ट कॉमनली यूज टोबैको प्रोडक्ट अमंग मिडिल एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन यूएस. और 2.1 मिलियन जो है, 2.1 मिलियन विच मीन्स 7.7% स्टूडेंट्स दैट इज यूजिंग ई सिगरेट्स. मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी डेटा आपका जो है 5,50,000 के अराउंड है. इट मीन्स दैट 4.6% मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स. ये यूएस का डेटा है. सो दिस डिवाइस आर नाउ गेटिंग अ न्यू जनरेशन hooked on nicotine and exposing them to potential long-term health consequences. Children have been lured into trying and becoming addicted to e-cigarettes and vaping device through a targeted marketing of flavors such as strawberry, pop rocks, बहुत सारे flavors में use करते हैं. So in addition to alleged predatory marketing tactics, इससे mental health issue and the negative effect of excessive technology use are also driving some children towards these devices. तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं चिल्ड्रन को, ऑपरेटिंग ऑन द टू लेवल्स. पहला ये कि जो चिल्ड्रंस हैं दैट आर इंक्रीजिंगली सस्पेक्टेबल टू न्यू एज डिवाइस फ्रॉम एन अर्ली एज. सो व्हाट वाज वंस एन एडोलेसेंट कंसर्न फॉर एंगेजिंग डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद जो कलरफुल इमेजनरी होते हैं दैट जो लाइक न्यू एज गेटवे डिवाइस suggested that these products will bring happiness and elevate one's social status in the lives of targeted children. So उनको ऐसा एक काइंड ऑफ उसे आप कह सकते हो कि एक सोशल स्टेटस के लिए मतलब जो बच्चे होते हैं एट अराउंड 13 ईयर्स की एज के लोग उसे यूज़ करना शुरू करते हैं. तो चिल्ड्रन ऑफन प्रायोरिटाइज peer preferences over their own, right? So that leading them to embrace vaping and other harmful behaviors. So those who vapes are more likely to experience feeling of loneliness, social isolation की अगर बात करें तो, so when compared to their peers who abstain from these, तो उनको ऐसा फील होता है जब आप इसे एडिट करना शुरू करते हो तो.
Second aspect ये है कि is the impact of such habits that will have on the physical and mental well-being of the children. While physical impact जैसे कि लंग डैमेज होना, कुछ टाइम पहले देर वॉज न्यूज़ नोएडा में एक 12th क्लास की स्टूडेंट थी जिनको आपको जो लंग है वो लंग कोलैप्स हो गया, मतलब जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कोलैप्स हो गया, एक्सेस यूज़ ऑफ वेप्स. तो ये जो वेप्स हैं उसमें निकोटिन टार टाइप से होता है विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. रीड. So the second aspect impact of such habits that will have on physical and mental well-being of children. Well, while physical impact जैसे कि lung damage हो गया, spread of e-cigarette or vaping use, lung injury जिसे EVALI कहते हैं, that have become evident. So we also need to shine and spotlight on the mental impact on children due to these new age gateway devices. So in Australia में भी that is increasing rate of e-cigarettes uses in Australia and worldwide. Such new age gateway devices are associated with mental health challenges such as depressive symptoms, anxiety, perceived stress and suicide related behaviors among adolescents. So इसमें क्या है कि पहली चीज़ तो the risk factors include friends' positive attitude towards vaping and parental smoking. E-cigarettes are highly addictive, particularly for individuals up to around the age of 25. This is development stage and make them especially vulnerable for structural and chemical changes induced by nicotine and addiction. और जब भी once addiction takes root, it can increase the likelihood of developing other substance use disorder later in life, that creating a cycle. सो यहाँ पे ये जो डेटा है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और डियर फ्रेंड, अगर आप में से कोई भी अगर ये सिगरेट्स यूज़ करता है, प्लीज़ ट्राई टू क्विट एंड टॉक टू योर साइकोलॉजिस्ट. अगर इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज़ कि यार मुझे को लाइक क्योंकि इस जो ई सिगरेट्स है दैट आर हाईली इंजीनियर ड्रग डिलीवरी डिवाइस है, उसको डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट वेरिएंट में सो दैट कि लोगों को लगे इसमें कुछ हार्मफुल हमारा इम्पैक्ट नहीं है, बट इट्स वेरी एडिक्टिव. Now we move to the next article, crime, health, worker safety and self-examination. Basically यहाँ पे जो है कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में डॉक्टर ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया था. So emerging answer the issue of health worker safety continue to remain reflexive and simplistic, and that could show an incomplete understanding of the malady beneath. So if in the case of grisly death of promising president doctor in Kolkata that has taken the country by storm, that had spurred the Supreme Court of India to take suo motu cognizance of the happening. So basically आप सोचो कि अगर कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी हालात है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ रहा है, नेशनल टास्क फोर्स जो है उसको उसके ऊपर काम कर रही है. तो बेसिकली ये आर्टिकल मेनली टॉकिंग अबाउट the impact of worker safety and self examinations के ऊपर, क्या workers की क्या क्या safety होनी चाहिए. And apart from reforms that centering on administrative transparency, accountability and oversight, effective whistleblower reporting and protection mechanism and through digitalizations of public management system are crucial. So the need of ombudsmanship and other instruments to minimize political institutions and maneuvering cannot be overstated, right? So in such circumstances it is hard to conceive how much help would realistically accrue from merely improving the state of health workers. Now we move to the next article. Here is talking about crime and the freedom of speech. So ये जो word हमने use किया, freedom of speech and expression, freedom of speech and expression, this is mentioned in the article 19th of the Indian Constitution. So authorities in France have arrested Pavel Durov, the co-founder and CEO of Telegram, had allegedly allowing a wide range of crimes due to a lack of moderators on secure messaging app and a lack of cooperative with police. So यहाँ पे जो राउटर्स है मैगजीन ने उसको मेंशन किया. French President Emmanuel Macron posted on Twitter, now it's known as X, the arrest of Durov, who was detained at an airport near Paris on August 24. That was not a political decision. So while France remained committed to the freedom of expressions,
These freedoms are upheld within a legal framework, both on social media and real life, to protect citizens and respect their fundamental rights. So official telegram जो handle है उस पर mention किया हुआ है कि जो Durov है case is the latest instance of national governments and internet companies clashing over the regulation of content posted online. तो 2013 में क्या हुआ था, पावेल जो हैं पावेल Durov and his brother Nikolai founded Telegram. 2013 में ये established start किया था Telegram को. Pavel and his brother Nikolai founded Telegram, focusing on user privacy. It allows groups with up to 2 lakhs members and sync with multiple devices, giving it an edge over apps like WhatsApp. It has more than 900 million users worldwide. So Durov is now a billionaire with French and US citizenship. A recent report by the Associated Press said that it still has a Russian citizenship. So Durov जो है arrest हुआ linked to the proceeding, accused Telegram of complicity of numerous cases linked to drug trafficking, support of terrorism and cyber attacking. So the high degree of privacy on Telegram has allowed some users to use it for illegal activities. और FAQ क्वेश्चन में यहाँ पे मैं ये मेंशन किया हुआ है, Telegram says we have to process legitimate requests to take down illegal public content with the app, but this does not apply to local restrictions on freedom of speech. If criticizing the government is illegal in a country, Telegram will not be a part of such politically motivated censorship, it adds. So government seeking to regulate illegal activities that have earlier acted against the Instagram also. So 2013 में जो major part is that 2013 में इसको जो Pavel and his brother Nikolai, the Pavel and Nikolai that founded Telegram, or that was main focusing on users privacy, और इसमें group को allow किया था कि that 2 lakhs members that was synchronized with multiple devices, and that it giving it to the edge over apps like WhatsApp, and it has more than 900 million users worldwide. So this is the important things that we need to understand, right? And अभी उसका impact क्या हुआ इंडिया में कि जो Indian government है that have expressed deep concern over the problem of fake news and have taken up to the issues with WhatsApp and Twitter as well, जिसे अभी में X कहते हैं. Now we move to the next article. Here is Jay Shah said to become youngest ICC chairmanship. So ICC, International Cricket Council, this is International Cricket Council. Where is the headquarters of International Cricket Council? Is in Dubai, UAE. So यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल BCCI की पहले ये चीफ थे, दैट मीन्स बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर just a second. Board of Cricket in India is the youngest chairmanship of International Cricket Council. So Board of Cricket for Cricket in India, that is BCCI, that is said to become youngest chairmanship of International Cricket Council. He will take over the New Zealand, और अभी जो हैं वहाँ पे उसके हेड कौन है, ICC के थे पहले जिसका नाम था जिनका ग्रेग बार्कले. So ये जो अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, इनकी एज कितनी है, 35, will join club of जगमोहन डालमिया, शरद पवार एंड श्रीनिवासन, शशांक मनोहर, ये सारे वहाँ पे that is headed the games governing body. With the ICC rules prescribing an independent chairmanship, Shah will have to give up their post. So यहाँ पे ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन सी governing body इनके साथ और join करती है. Now we move to the next one. Over 3 crore PM Jan Dhan Yojana accounts to be opened in financial year 2025. ये हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं.
फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने ये चीज़ अनाउंस करी. सो द गवर्नमेंट एम्स टू ओपन मोर देन 3 करोड़ अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर जो 2024-2025 में है. सो 3 करोड़ जनधन जो योजना है दैट इज अकाउंट्स टू बी ओपन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025. 53.13 crore accounts are operated by the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts out of over 173 crore operative CASA accounts also which we have already discussed. और यहाँ पे जो लॉन्च कब किया था इसको 2014 में लॉन्च किया था. This program was launched in the year of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched in the year of 2014. So number of bank accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana that has risen nearly fourfold to 53.13 crore as on August 16, 2024. Now इसमें एक और आप जान लो कि अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना देर आर नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस एंड नो मिनिमम बैलेंस चार्ज किए जाते हैं. इसमें फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड दी जाती हैं, सॉरी डेबिट कार्ड नॉट क्रेडिट कार्ड, सॉरी, विद एन इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होते हैं ₹2 लाख की एंड एक्सेस ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है 10,000 रुपीज़ की. सो बहुत सारे मेजर फीचर्स हैं इसमें. मेक श्योर ये जनधन अकाउंट्स वाले में ये सारी चीज़ें दिस नॉट मैंडेटरी. प्रज्ञान रोवर रिवील साइन ऑफ मैग्मा ओशन एंशिएंट मून. यहाँ पे विक्रम लैंडिंग स्पॉट करता है यहाँ पे, वो ऑब्वियस सी बात है. सिमिलर आर्टिकल्स वी डिस्कस्ड. नाउ एज आई टोल्ड यू इन क्विक टिप्स, और आज क्विक टिप्स में हम देखेंगे कि लाइक हाउ टू लर्न द G7 कंट्रीज, G7 कंट्रीज को लर्न करने के लिए. एंड हियर द ट्रिक इज जूस विद GF. तो यहाँ पे J स्टैंड फॉर जापान, U फॉर USA. इटली ने इस साल इसको होस्ट किया, दैट इज अ होस्ट कंट्री. While we talk about G7, तो G7 was established in the year of 1975. Russia was a part of G7. 2014 में Russia was isolated. And C for Canada, England, Germany and France. Now we move to the next article, next topic. Next is questions of the day. And questions of the day में क्या है आज? Very first question is here. Why are tensions in the South China Sea particularly concerning for global energy markets? Now here is the food option. Mention the extreme word is here. South China Sea is the only source of natural gas for East Asia. The only is an incorrect one. South China Sea accounts for the majority of global petroleum production. That is somehow correct. And about 40% of the world petroleum products are transported. That is the correct one. So South China Sea is crucial for global energy markets because approximately 40% of the world petroleum products are transported through the region annually. What are the following countries not a member of G7? As I told you, Russia is not a member. A is the right answer. The group of 7, founded in 1975, formerly called Library Group. Group of 6, group of 8. Reversion is an intergovernmental organization made up of 7 of the world's largest advanced economies. It includes Canada, France, Germany, Italy, Japan and United Kingdom and United States. Matarbari Port is an under construction seaport that is located in where is Bangladesh. Consider the following statement about the conciliations process under the POSH Act 2013. इसमें एक internal complaints committee होती that may allow the matter to be settled through conciliations at the request of aggrieved women. तो ये जो आंसर है first one is a correct one. Monetary settlement नहीं होती है उसमें, तो obvious A is the right answer. Here it is the last one about Amnesty International. Amnesty International is an international organization composed of volunteers who campaign for human rights. तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? So basically statement third is incorrect one. First is correct, as Amnesty International is indeed an international organization composed of volunteers who campaign for human rights. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this,
please let us know, and make sure please share this session to your friends and family. They must aware about what is happening around us. Make sure if you are new to this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Stay tuned. We'll meet you in the next YouTube session. Till then, bye bye and take care. अपना ख्याल रखें. आपके पास कोई भी सवाल है, please ज़रूर आप मुझे YouTube session बताएं. Our team is always willing to help you. Thank you so much for joining with us. We'll meet you in the next session. Till then, bye bye and take care once again.